नमस्कार, मनी 9 पर आप देख रहे हैं आज का सौदा। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस खास शो में हम आपको बताते हैं मार्केट का पूरा एक्शन राइट फ्रॉम द फर्स्ट टेक, और साथ ही आपको मिलवाते हैं एक टेक्निकल एक्सपर्ट से जो कि आपको बताएंगे कि आज के बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और आगे जाते हुए कौन से स्टॉक्स में और कौन से सेक्टर्स में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं। आज के खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जय पुरोहित मोतीलाल ओसवाल से। जय, गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बिफोर बिगिनिंग अबाउट today's outlook, I wanted to take your view on the technical halt or the technical glitch that we saw on NSE day before yesterday. I know it was a very unusual trade for all of us. We all were trying to grapple with the fact that what will really happen to traders, because it was already a penultimate day of the FNO expiry as well. So all the more troubles had been brewing in. What was your experience? I'm sure बहुत सारे कॉल्स आपके पास भी आए होंगे आपके क्लाइंट्स के कि उनके ट्रेड्स पे अब किस तरीके से आगे एग्जीक्यूशन हो पाएगा या नहीं। आपको किस तरीके से ये पूरा जो सिचुएशन थी आपने कैसे हैंडल करी अपने क्लाइंट्स के लिए और उनके लिए, ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए क्या बड़ी लर्निंग्स आई? Yeah, good morning, Sakshi. First of all, as you said, this is a one-off event. मतलब ये शायद 3 साल पहले एक बार हुआ था टेक्निकल ग्लिच, जहाँ पे लगभग 2-2.5 घंटे के बाद में फिर से एनएसए ने स्टार्ट कर दिया था एंड इट स्टार्टेड बिफोर 2। अभी ये टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 3:30 के बाद में फिर से मार्केट स्टार्ट हुआ एंड देन इट कंटिन्यू टिल 5 PM फॉर द फर्स्ट टाइम. But there are many learnings to it, and in fact, there are common learnings which every trader and every investor should follow. So the first learning is don't be over leveraged. ठीक है? So major problems जहाँ पे आता है वो आता है over leverage में, because there is no need to panic as such because of these glitches. Actually, if you are an investor, obviously like the price may open 1% up or down, and in fact, in many cases in opening itself, we seen such kind of a movement. Like today, also the price has came down by around 2-3% most of the stocks. तो ये चीज है ना, नॉर्मल एक सिनेरियो है जहाँ पे ट्रेडर्स को लॉस होता है या फिर प्रॉफिट भी हो सकता है. बट जो टेंशन की प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे पैनिक होता है, वो होता है व्हेन द ट्रेडर्स आर ओवर लिवरेज. लाइक इफ दे आर टेकिंग अ लिवरेज ऑफ 10x 12x, in such scenario they are very worried about the market movement and how to exit their positions. But if we talk about our organization, how we handled it, so we communicated well with all the clients, and we were continuously sending and flashing messages about the market may halt its trading. We sent that message a couple of minutes before it stopped, and in fact जो ओवरऑल जो एग्जीक्यूशन पार्ट था, सो वेर इन लाइक वी ट्राइड आवर बेस्ट टू help the traders to exit their positions into the BSE, and so that there should be the minimal loss on their positions. But overall, the major learning is like traders should not keep their position over leverage. So अगर वो नहीं होगा, अगर लिमिट में leverage यूज कर रहे या फिर इन्वेस्टर्स है जो शायद लिवरेज यूज नहीं कर रहे, so उनके लिए आई डोंट थिंक कि देयर इज मच प्रॉब्लम विथ सच काइंड ऑफ ग्लिचेस, बिकॉज दे can happen anytime. Like such kind of glitches or some negative news can flash anytime in the market. So we have to be prepared about all these things as well. Absolutely. Let's move on to find out what is your market outlook and how you approaching the markets as of today. आज जो हम लोगों ने ओपनिंग ट्रेड देखा है और शार्प वीकनेस के साथ हमारा ओपनिंग हुई है, वो खास तौर पे से ग्लोबल क्यूज की वजह से आया है। तो इस तरीके से जो चार्ट्स में ऑलरेडी एंटिसिपेटेड नहीं था, तो ट्रेडर्स को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए ऐसे मार्केट्स को? देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ की वजह से अपना मार्केट नीचे ओपन हुआ है, एंड आई थिंक दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, बिकॉज कल का क्लोजिंग अच्छा था. इफ यू टॉक अबाउट द रोल ओवर विच हैपन यस्टरडे, सो रोल ओवर्स वेर आल्सो ऑन द लॉन्ग साइड, एंड अच्छा रोल ओवर्स हुआ है लॉन्ग साइड में निफ्टी में, so which is a good sign on the derivatives part as well. Chart structure is also good. But as of now, if you look at our individual chart structure, like Nifty ka if I talk, so the structure is still bullish, and till the time Nifty holds about 14,700, this dip should be used as a buying opportunity. The structure did not change in the Nifty, and thus one should not preempt any
टॉप फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ। ओके। सो ट्रेंड के साथ में रहना ही बेटर है, एंड ये जो डिप है इसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करें। 14,700 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। आई नो इट्स अराउंड 200 पॉइंट्स डाउन फ्रॉम द करंट लेवल्स, बट दैट्स द प्रॉपर स्टॉप लॉस, and on the upside we can see around 15,250, 15,300 kind of levels again. ओके, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अभी भी रखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को इस मार्केट में भी। लेकिन पूरी मार्च सीरीज के लिए आपका आउटलुक क्या है, कैसे रहने वाली है ये सीरीज, और ट्रेडर्स के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स के लिए भी? ये सीरीज की अगर बात करें तो जैसे कि रोल ओवर्स की बात की हम लोग ने, निफ्टी में रोल ओवर्स अच्छे हुए हैं। मैनी पीएसयू स्टॉक्स हैड सीन गुड मोमेंटम इन लास्ट कपल ऑफ वीक्स, वहां पे अच्छा खासा रोल ओवर्स भी हुआ है। सो देयर आर लाइक सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट विच में कंटिन्यू, लाइक वी कैन सी मार्केट remain in a range, like so the broader range can be 14,500 to upside on the 15,400 kind of level. So 900,000 पॉइंट की रेंज में शायद निफ्टी ट्रेड करे, बट स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा एक्शन देखने के लिए मिल सकता है मार्च सीरीज में। एंड इनफैक्ट द प्रिफर्ड सेक्टर वुड बी द पीएससी इंडेक्स। तो जहां पे अच्छा एक ब्रेकआउट आया और जो पीएसयू काउंटर्स है, एंड अपार्ट फ्रॉम पीएसयूज द ओएमसीज एज वेल। तो ओएमसी पीएसयूज यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम लग रहा है, और एफएमसीजी जो पूरे फरवरी सीरीज में अंडर परफॉर्म किया था, जहाँ पे शॉर्ट साइड में रोल ओवर्स भी हुआ है, पोजीशन थोड़ी नेगेटिव है, वहां पे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस आना चाहिए। तो ये कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स है जहां पे थोड़ा सा लीड हो सकता है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी लाइक बैंकिंग में टेक अ पॉज फॉर वाइल, जो अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस था जैन फेब में, वहां पे थोड़ा सा पॉज आ सकता है। सो लाइक इफ यू टॉक अबाउट द स्टॉक्स, सो लाइक ओएमसी एज आई सेड वहां पे अच्छा मोमेंटम है, पीएसयूज में अच्छा मोमेंटम है। सो द प्रिफर्ड pick for coming few days would be like NTPC. It is giving a breakout. In fact, today after a gap down opening also it is started moving higher. तो वहाँ पे एक अच्छा momentum भी है, long side में rollovers भी हुआ है, and we are expecting the stock to touch around 120 levels. So one can look for buying with a stop loss of 103. Apart from that, one stock would be from the FMCG stock, FMCG space, that is stock had short rollovers जहाँ पे थोड़ा नेगेटिव पोजीशंस इंटैक्ट है, बट चार्ट में एक बाउंस के साइंस दिख रहे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ शॉर्ट कवरिंग बाउंस इन ब्रिटानिया, सो वी कैन सी अराउंड 3,600 लेवल्स इन ब्रिटानिया एज वेल. So one can take a long position with the stop loss of 3,300. And the third stock is in the NBFC space, which is the PEL, Piramal Enterprises. The stock had given a major breakout, and it is sustaining well above the breakout levels. So the momentum can continue in PEL towards 2,050 levels, and thus one can look to buy with a stop loss of 1,900. Okay, sure. Thank you so much, Jay, for sharing your outlook with us. Let me just quickly recap for all our viewers as well the three stock picks that you have given for the day. Piramal Enterprises is one of your picks where you have given a bullish outlook, and investors can approach this stock with a target price of 2,050 and a stop loss of 1,900 on the counter. Already we are seeing a 5% sharp uptick on the counter. From the FMCG space, you've bet big on Britannia, which is showing an uptrend to you on the technical chart, as well as the target price that you've suggested is 3,600 and a stop loss of 3,300 on the stock can be kept as well. And from the life insurance space, it is from the other in power space. In fact, NTPC is the stock that you have given in. The stop loss you need to keep is 103 on the counter with a target price of 120. You have been seeing slight downtick, but a reversal can soon be expected on this counter too. Thank you very much, Jay, for sharing your outlook on the markets as well as sharing your stock picks with us. Hope to soon interact with you on other topics as well. इसी के साथ देख लेते हैं कि मार्केट्स में इस समय किस तरीके का ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो शार्प वीकनेस के साथ आज बाजार की ओपनिंग हुई थी, अभी भी डाउन टिक्स के साथ काफ़ी ब्रॉड बेस जो सेल ऑफ है वो देखने को मिल रहा है।
51,000 के लेवल तो आज ओपनिंग के नीचे आज लेवल ओपनिंग हुई थी सेंसेक्स की। अभी भी अगर आप देखेंगे तो अब हम 50,343 के लेवल्स पर काम कर रहे हैं, यानी कि 1.5% तक वीकनेस ऑलरेडी हमने शुरुआती 45 मिनट्स में देख लिया है। अगर आप देखेंगे तो 700 पॉइंट्स का लॉस है यहाँ पर। 15,000 का लेवल गिव अप कर दिया है निफ्टी 50 ने भी ओपनिंग लेवल्स के साथ ही। 14,912 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है। हालांकि अगर आप देखेंगे ओपनिंग लेवल्स में काफी इससे भी ज्यादा डिक्लाइन था, थोड़ा बहुत रिकवरी अपने लॉसेस की है इस समय मार्केट्स ने। निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वीकनेस है, अंडर परफॉर्म कर रहा है ये इंडेक्स मार्केट्स को, और 2.5% तक की वीकनेस, 854 पॉइंट्स का लॉस यहां देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो 150 अंकों की गिरावट के साथ 0.7% वीकनेस। मिड कैप इंडेक्स काम कर रहा है और वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 0.32% तक की वीकनेस देखने को मिल रही है। इसके आगे देखते हैं कि आज की जो नई लिस्टिंग होने वाली है उसके बारे में क्या कुछ अपडेट्स हैं। तो रेलटेल का आईपीओ पिछले हफ्ते बंद हुआ था फरवरी 18 को, और काफी अच्छा रिस्पांस इस आईपीओ को मिला। 42 टाइम्स ये सब्सक्राइब भी हुआ था। इंडिकेशंस प्री ओपनिंग प्राइसेस में यही दिख रहे हैं कि एक प्रीमियम लिस्टिंग हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि आज मार्केट का सेंटिमेंट काफी वीक है, तो वो भी एक ओवरवे हो सकता है रेलटेल के लिस्टिंग पर, तो डेफिनेटली उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ इस खास शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन लगातार मार्केट का कवरेज जारी रहेगा। मनी 9 पर आप जुड़े रहिए हमारे साथ।